July 1988. A US Navy cruiser is battling Iranian gunboats in the Persian Gulf. तभी अचानक उसके जो रेडार है, it picks up a mysterious aircraft. क्या ये दोस्त है या ये दुश्मन है? उनके पास 7 मिनट है ये सब डिसाइड करने के लिए. और जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट इस नेवी क्रूजर के नजदीक आ रहा है, the pressure is mounting. और इस नेवी क्रूजर के कैप्टन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है कि क्या वो इस प्लेन को शूट डाउन कर दें या वो अपने क्रू को ही रिस्क पे डाल दें. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूँ एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं अपने फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे. और इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे जुलाई 1988 की एक दुर्घटना. It is a routine short-haul flight, but an Iranian Airlines plane is heading into mortal danger. It's opening fire with guns. वो एक वॉर जोन को अप्रोच कर रहा है जो इरानियन पैसेंजर जेट है, जहाँ पे कि एक यूएस नेवी शिप जो है इज इन कॉम्बैट. द क्रू इज ऑन हाई अलर्ट. कोई भी चीज इनके नजदीक आ रही है, it is considered to be as a threat. Air contact still inbound, increasing speed and descending range 11 United miles. States naval warship. Closing and descending 1,000. Now you're in real serious business. You are standing into danger? Wait a minute. I could be dead. Range 13 miles. जो वार्निंग्स दी जा रही हैं उस एयरक्राफ्ट को, वो इन वार्निंग्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ईरान एयर की फ्लाइट 655 is oblivious to the danger. (1988) में ईरान और इराक have reached a stalemate after having an 8-year-old battle. और दोनों साइड की जो ऑयल डिपॉजिट्स हैं, दे आर एट अ टारगेट. यूनाइटेड स्टेट्स जो है पर्शियन गल्फ में एक वॉच डॉग बन गया है इन दोनों के बीच. नियरली 30 यूएस वॉरशिप्स पेट्रोल न्यूट्रल टैंकर्स इन द गल्फ. 3 जुलाई 1988 की सुबह, आफ्टर हैविंग अ रूटीन पेट्रोल ड्यूटी, यूएसएस विंसेंस इज हेडिंग फॉर पोर्ट इन बहरीन. उसके क्रू को अब कुछ दिन आराम मिलेगा. While his men are looking forward for the 4th of July break, Captain Will Rogers is already up. उनको काफी डिस्टर्बिंग न्यूज मिल रही हैं from the US intelligence agencies. उनको ये बताया जा रहा है कि इस वीकेंड में जो है ईरानियन एयरफोर्स से उनको शायद कुछ ट्रबल मिल सकता है. Yeah. इन द विंसेंस कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर जो वॉच ऑफिसर है, उसको एक काफी डिस्टर्बिंग न्यूज मिली है फ्रॉम अनदर शिप इन द यूएस फ्लीट कि ईरानियन गनबोट्स जो है एक पाकिस्तानी मर्चेंट वेसल को हैरेस कर रहे हैं. Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. The frigate USS Alma Montgomery is towards on the north side of the USS Vincennes near the narrow strait of Hormuz. और यही वो जगह है जहाँ पे कि ईरानियन गन बोट्स जो है बहुत ही एक्टिव हैं, targeting the oil tankers as they leave the Persian Gulf. Designed to guard an aircraft carrier group, the Vincennes is a $1 million Aegis cruiser. The USS Vincennes has
Mark 26 missile systems, Harpoon anti-ship missiles, 2 5-inch guns and a Phalanx close-in firing system which fires around 3000 rounds per minute. लेकिन जो सबसे अच्छी बात है इस शिप में वो है उसका रेडार सिस्टम जो कि तकरीबन 100 टारगेट्स को टच कर सकता है और डिस्टेंस जो उसका है वो है तकरीबन 300 किलोमीटर दूर। 300 किलोमीटर दूर ये तकरीबन 100 टारगेट को सर्च कर सकता है और इसके क्रू मेंबर्स के लिए ये तो है स्टार वॉर्स एट सी। I was very proud. Just technically, it just felt like a strong, secure ship to be on. We felt invincible in a way. We had some of the most up-to-date weaponry and the radar and everything else. There wasn't a whole lot that we couldn't do. और कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर कैप्टन रॉजर्स जो है वो ओवरसी करते हैं अ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज्ड कमांड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके लार्ज स्क्रीन रेडार सिस्टम जो है एकदम जानकारी दे देते हैं, तत्काल ही जानकारी दे देते हैं अबाउट द टैक्टिकल पोजीशन ऑफ द एरिया। Lieutenant Commander Will Bhambri is the tactical officer responsible for the surface warfare. Nick, what do we got on visual? Got a cluster of bog hammers here near the Montgomery. Another cluster may be closing a merchant vessel. तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा इरानियन गनबोट्स जो हैं अब तैयारी कर रही हैं टू अटैक अ मर्चेंट वेसल। We knew that they had rockets. We knew that they had machine guns. We knew that if they got within certain range that they could, literally fire off their rockets and cause grave danger. In 1988 इरानियन गनबोट्स जो हैं अभी तक तकरीबन 13 फॉरेन टैंकर्स को अटैक करते हैं हर महीने और ये सद्दाम हुसैन को रोकते हैं टू एक्सपोर्ट इराकी ऑयल। Roger that. Vincennes out. Vector in, Ocean Lord. कैप्टन रॉजर्स जो है अपनी हेलीकॉप्टर को भेजते हैं टू इन्वेस्टिगेट व्हाट दीज इरानियन गनबोट्स आर अप टू। Roger, Trinity Sword, we read you. Vectoring toward Montgomery now. ओशन लॉर्ड्स पायलट जो है जल्दी ही इरानियन गनबोट्स को देख लेते हैं और वो अभी तक किसी भी सस्पिशियस रूप में काम नहीं कर रही है, बट वो अपने हेलीकॉप्टर को काफी नजदीक से ले जाते हैं और उसका रिस्पांस एकदम तत्काल उन्हें मिल जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग उनके ऊपर होने लगती है। Jesus! Trinity Lord, this is Ocean Lord 2-5. We are taking fire. Executing evasion. Clearing. 2-5, this is Trinity Sword Actual. Is anyone hurt? Confirm hostile fire, over. Trinity Sword, no injuries. We confirm 8 to 10 rounds of airburst from the northernmost group of Iranian small craft. Over. Ocean Lord, this is Trinity Sword Actual. Return immediately to Vincennes cover. Close Ocean Lord's position at best speed. Bearing 3-3. अंडर द अमेरिकन लॉ कैप्टन रॉजर्स जो है इस सेल्फ डिफेंस में अपनी तरफ से भी फायरिंग कर सकते हैं। Full speed. Set general quarters. Officer of the deck, set general quarters. The situation is escalating rapidly. When we went to general quarters, all of the hatches had to be tightened down. Everything had to be at a certain level of defense in case something happened. Once you get to that station, you're supposed to don your helmet and your gas mask. Nobody's allowed to move around the ship. You're supposed to stay at your battle stations doing your job. सिर्फ 6.5 मिनट बाद जब कैप्टन रॉजर्स ने जनरल क्वार्टर्स को कांटेक्ट किया था तो विंसेंस इज रेडी फॉर कॉम्बैट। कितनी ही बार उन लोगों ने ये ड्रिल को प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन आज ये बात जो है हकीकत होने वाली है। पास में ही लक कहें या कुछ भी कहें, एक मीडिया ग्रुप भी है जो कि सारे एक्शन को फिल्म कर रहा है। एज द शिप यूएसएस विंसेंस मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एट ओवर 30 नॉट्स स्पीड, कैप्टन रॉजर्स जो है अब सीधा ही इरानियन गनबोट से लड़ाई के उसमें बढ़ रहे हैं आगे।
This was Vincent's first time in action and the result would be catastrophic. 3 July 1988, as the USS Vincennes powers north towards the Strait of Hormuz, another US ship has reported active Iranian gunboats operation, and those boats have already fired on the Vincennes helicopter. कैप्टन विल रॉजर्स द थर्ड अभी सिर्फ 1 महीना ही हुए हैं इस पर्शियन गल्फ में आए हुए और उन्होंने एक रेपुटेशन बना ली है टू एज बीइंग द कमांडर हु कैन टेक रोबोस्ट एक्शन, और उनकी शिप को एक निक नेम दिया गया है द रोबो क्रूजर. Deck set, general quarters. उसी वक्त तकरीबन 87 किलोमीटर दूर एट द बैंडर अब्बास एयरपोर्ट एक ईरान एयर की फ्लाइट 655 इज गेटिंग रेडी फॉर अ 28-minute हॉल्ट टू अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज टू दुबई. 37-year-old Mohsen Desire is the captain of this Iran Air Flight 655. उनके भाई हुसैन ये जानते हैं कि he is dedicated to the job. 655 standing by for ATC clearance. He was very enjoying what he was doing. He really liked it. He was logging so many hours, over 10,000 hours of flight. Request update on status of कैप्टन मोहसिन की जो फ्लाइट है वो डिले चल रही है. 27 मिनट की डिले हो चुकी है इस फ्लाइट को, एंड इट इज बिकॉज ऑफ अ पैसेंजर हैविंग इमिग्रेशन प्रॉब्लम. और ये डिले जो है विंसेंस के क्रू को भी कंफ्यूज कर देगी डिस्पाइट हैविंग ऑल द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विद देम. नेवी क्रू जो फिल्म कर रहे हैं ये सारी घटनाएं, वो जो है एज द विंसेंस इज कमिंग क्लोजर टू दिस इरानियन गन बोट्स. क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग हुई थी, कैप्टन रॉजर्स का जो है इसी बात पे परमिशन मिली है कि वो सिर्फ तभी उसी क्षण फायरिंग कर सकते हैं जब उनकी शिप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए किसी इरानियन गन बोट्स के. और उस वहां की धुंध में इट इज डिफिकल्ट टू सी व्हाट दीज गन बोट्स आर एक्चुअली डूइंग. One appears to be going out to starboard and one's in the middle. Just off the starboard bow has a machine gun on it. लेकिन कैप्टन रॉजर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इरानियन गन बोट्स के ऊपर फायर ओपन करने से. अगर वो पहले ही थोड़ा एग्रेसिव मूड दिखाते हैं इरानियन गन बोट्स, तो ये रीजन काफी है उनको अपनी तरफ से अटैक करने के लिए. As they turn and begin to maneuver and close us fairly high speed and on erratic courses, we ask permission to fire a warning shot. This is Vincennes. Request permission to engage Boghammer Group. The surface commander of the Gulf is on his ship in Bahrain. Captain Richard McNamara has no hesitation in granting Rogers the permission. The fact that the helicopter was shot at virtually required a response. Vincent, this is Garcia. Take Boghammer Group with guns. The rules of engagement at that juncture were quite clear, and so there was no question as to what was required at that juncture. I say again, take Boghammer Group with guns, over. Gulf Sierra, this is Vincennes. Opening fire with guns. Assumed hostile track 4456. Vincennes out. You can fire for effect. सुबह के 9:43 हुए हैं. A routine encounter in the Gulf has become deadly serious. The ship shakes. It's a 5-inch gun. I mean, there's a lot of powder behind it to propel that projectile. और ये पहली बार है कि when the crew of Vincennes has seen action.
combat was, you know, that was the furthest thing probably from any of us. Even though we were a combat ship, it was one of those things. It's like it'll never happen to us, but yet it did. जो गन बोट्स हैं वो भी वापस फायर करती हैं, लेकिन उनकी जो है काफी शॉट गिर रहे हैं उनके द्वारा जो फायरिंग हो रही है. We were maneuvering rapidly because, in the first place, my desire was to keep them at arm's length, if you will. We were shifting targets as rapidly as we could, and Montgomery at the same time was directed to engage a small craft, which she did. Verify me rounds to the train. जो विंसेंस है और मैंगोमरी जो है वो दोनों मिलके ही इन इरानियन गन बोट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और पोजीशन भी अपनी चेंज करते जा रहे हैं. दोनों जहाज विंसेस और मैंगोमरी जो है दोनों एक्टिव एक्शन में है और कोई भी टारगेट उनकी शिप की तरफ बढ़ेगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल थ्रेट. Lieutenant Commander Scott Lustig is the person responsible for informing the captain. अगर कोई आसमान से थ्रेट इनकी तरफ बढ़ती है तो ये जनाब जो है स्कॉट, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्टन को बताना. वो एक एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे हैं जिसने अभी हाल फिलहाल ही कोर्स चेंज किया है and it is heading straight towards Vincennes. 72 Iranian P-3, range 62 miles. The aircraft has been identified as Iranian P-3 Udaan, which is a long-range maritime surveillance aircraft. Vincennes जो है उस एयरक्राफ्ट को मिलिट्री फ्रीक्वेंसी पे बताते हैं कि it has been tracked. 270, this is United States Naval warship. Request you state your intentions. U.S. warship, this is Iranian Papa 3. Our intention is search mission. We keep clear of your unit. The pilot of the plane promises that he will maintain his distance, लेकिन रॉजर्स ये बात जानते हैं कि P-3 जो है इनके शिप को रेडार पे देख रहा है और हो सकता है कि वो एक इरानियन एयर स्ट्राइक टीम को इन्फॉर्म कर दे इनके बारे में. और ये लड़ाई हर गुजरते मिनट के बाद बहुत ही खतरनाक होती जा रही थी. Yeah, I want rounds in the tray. Give me a fire and solution for that northernmost group of bog hammers. Scott, keep me updated on the P-3. फाइनली दूसरी तरफ सारे पैसेंजर्स उनके अब प्लेन में सवार हो चुके हैं और कैप्टन रिजायर जो है he is ready to take off. Taxiway 5 is open. Iran Air 65. 3 जुलाई की दिन में 10 फ्लाइट्स हैं जो कि इस एयरपोर्ट बंदराबाद से शेड्यूल की गई हैं. लेकिन ये बात भी जानने को जरूरी है कि इरानियन एयरफोर्स भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फ्लाइट्स. लेकिन यूएस इंटेलिजेंस सबको वार्न करती है कि जो F-14 फाइटर जेट्स यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं, दे आर अ बिग थ्रेट टू द यूएस. Have a nice flight. 655 cleared for takeoff. कैप्टन डिजायर को इस बात का अभी तक पता नहीं है कि जो उनकी फ्लाइट है ईरान एयर फ्लाइट 655 इज हेडिंग टुवर्ड्स अ रैविशिंग सी बैटल. और इस फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही विद इन सेकेंड्स विंसेंस जो है इस फ्लाइट को ट्रैक कर लेते हैं. उनका रेडर जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन फिर भी वो इस बात का पता नहीं लगा पाते कि जो जहाज उड़ा है अभी वो उसका टाइप और साइज क्या है. आइडेंटिफिकेशन सुपरवाइजर एंडरसन अब ये प्रक्रिया शुरू करते हैं कि जो प्लेन आ रहा है उनकी तरफ वो दोस्त का है या दुश्मन है. और उनका पहला स्टेप होता है टू यूज द सिस्टम IFF. All large aircraft have IFF. They all have identification friend or foe. Every aircraft has its own code, and you're able to look up that code and say, okay, it does give you more information. और वो शुरुआत करते हैं टू फाइंड आउट द IFF सिग्नल कमिंग आउट ऑफ दिस इनकमिंग एयरक्राफ्ट. At the press of a button, an electronic signal
radiates through the atmosphere, and aircraft transponder automatically bounce back in electronic reply. और कोड में बातचीत होती है जिससे ये पता लगाया जा सके जो एयरक्राफ्ट है, is it a friend or it is a foe. Notes 1, 2 and 4 indicate a military aircraft. Iran Air Flight 655 has Note 3. Everybody has Mode 3. So that alone doesn't identify a non-hostile aircraft. It could be civilian, it could be military. और ऐसा भी पॉसिबल है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट वो नोट 3 सिग्नल दे, तो इसलिए एंडरसन जो है दूसरा स्टेप करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं कमर्शियल फ्लाइंग शेड्यूल और वो देखने की कोशिश करते हैं कि कोई शेड्यूल फ्लाइट तो नहीं है जो इस एयरपोर्ट बैंडरस आवाज से टेक ऑफ करने का टाइम हो जिसका, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता लगता. Unidentified Iranian aircraft on course 203, speed 303 knots, altitude 4,000 feet. This is United. और अब विंसेंस डायरेक्टली उस प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑन अ मिलिट्री डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी. Miles from you. You are approaching United States naval warship in international waters. Request you state your intentions. Over. लेकिन दूसरी तरफ से इनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है. इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है विंसेंस के पास, लेकिन फिर भी उनके पास एक रेडियो नहीं है विच इज ट्यून टू सिविल एयरक्राफ्ट फ्रीक्वेंसीज. Unidentified aircraft on course 206 speed. अब विंसेंस के पास सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है टू कॉन्टैक्ट द एयरक्राफ्ट ऑन सिविलियन इंटरनेशनल एयर डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसीज. You are approaching a United States naval warship. Request you remain clear. और फिर भी उनको फ्लाइट 655 से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और चूंकि प्लेन उनकी तरफ नजदीक आता जा रहा है तकरीबन 8 किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से. All stations IDS. I have a possible mode 2 on track 4131, 1100, which breaks as an F-14. Possible mode 2. Breaking as an F-14. I repeat, incoming mode 2. और एंडरसन को एक और शॉक लगता है जब वो देखते हैं कि प्लेन की IFF फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई है. प्लेन जो अब सिग्नल जो मिल रहे हैं उससे वो दोनों आ रहे हैं, मोड 3 और मोड 2 1100. और एंडरसन जब अपने नोट्स को कंसल्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग डिस्कवरी मिलती है और वो थी कि जो प्लेन आ रहा है वो एक F-14 फाइटर जेट हो सकता है. एंडरसन के जो शब्द हैं वो एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं इन द कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और कैप्टन रॉजर्स के सामने जो है वो प्लेन दिखाया जाता है एज एन F-14 फाइटर जेट. 48 किलोमीटर दूर एयरबस with 290 people on board climbs over the Persian Gulf. और किसी को भी उस जहाज में ये नहीं पता है कि they have been misidentified and वो सीधा खतरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं. ईरान एयर का एक फ्लाइट 655 आराम से दुबई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि एक्चुअली में वो सीधा ही एक यूएसएस शिप की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एक एक्टिव लड़ाई में है उस समय. उस जहाज यूएसएस विंसेंस के ऊपर आइडेंटिफिकेशन सुपरवाइजर एंडरसन इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि जो प्लेन उनकी तरफ बढ़ रहा है वो एक ईरानियन F-14 फाइटर जेट है. और कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में वो प्लेन जो है इट हैज बीन मिस आइडेंटिफाइड एज एन F-14 फाइटर जेट. 1970 के दशक में यूएस ने जो है तकरीबन 80 F-14 जहाज बेचे थे ईरान को. They are the most up-to-date fighter in the Iranian Air Force. दूसरी तरफ विंसेंस का क्रू ये समझ के बैठा है कि वो अंडर अटैक आ गए हैं फ्रॉम द Iranian Air Force से. My heartbeat was way up, my blood pressure was way up. It was like, wow. I mean, the adrenaline was just flowing.
Lieutenant Commander Scott Lupstick is Captain Will Rogers, Anti-Air Warfare Coordinator. जो जहाज है अब सिर्फ 45 किलोमीटर दूर रह गया है, and he takes permission from the headquarters to shoot down the plane if it comes too closer to the ship. My intention is to engage at 20 nautical miles if he does not turn away. Do you concur? Over. You shoot one aircraft first, then take it under fire. You start crossing 20 miles, and that's an absolute threat to the ship. You're out there in the middle of the ocean. It's serious business. कैप्टन विल रॉजर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, और इस समय जब वो इस प्लेन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था उनको, उनका जो अटेंशन है इट इज ऑल्सो डाइवर्टेड टुवर्ड्स द इरानियन गन बोट्स. Captain, we have a situation with Mount 51. और इस लड़ाई के बीच में विंसेंस की फॉरवर्ड 5-inch गन हैज ऑल्सो जैम्ड. Full rudder turn. Bridge CIC. Hard to port. Steady ship's course. 280 degrees. Maintain speed. 1025 knots. Rogers is forced to turn his ship around at high speed, जिससे कि जो rear 5-inch guns हैं वो सामने की साइड आ जाए for the incoming firing which is coming from the Iranian gunboats. The ship leans, so if anything was not tied down, it of course went everywhere. It went sliding off, up against the wall. It turned sharp enough that if you were standing, you had to hold on to something to keep from falling over. Bring aft gun to bear now. As Captain Rogers struggles to keep the gunboats engaged, दूसरी तरफ कैप्टन रोज़ायर जो है वो भी बिजी है of taking the plane towards the cruising altitude. IR 58, Dubai 0715. Confirm you are squawking 6760. Affirmative. Confirmation that his aircraft is transmitting the civilian IFF code which can be easily identified on the radar. दूसरी तरफ विंसेंस के CIC में लेफ्टिनेंट विलियम माउंटफोर्ड जो है अब देखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है वो नोड 3 सिग्नल एडमिट कर रहा है, और वो सोचते हैं कि शायद वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो ही ना. Sir, possible calm air. विल रॉजर्स जो है अभी भी he is concerned about the failure of the aircraft to respond to his calls. The aircraft was warned. It's warned a number of times. Continued to close. Time is a demon here. If I have a long time to sort things out, you're going to take more time to look at this and more time to look at that. Unidentified aircraft. और चूंकि ईरान एयर की फ्लाइट 655 अब 37 किलोमीटर का थ्रेशोल्ड पार करती है, तो विंसेंस उन्हें फिर वार्न करता है to either change their course or face the consequences. 120 miles from you. You are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. Request you remain clear of me. कैप्टन रॉजर्स के पास अब अथॉरिटी है कि वो प्लेन को शूट डाउन कर सकते हैं. Captain, do you wish to engage at 20 miles? Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? I had difficulty at 20 miles. I just did not want to shoot. I could not believe that this was really happening to us. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Negative. कैप्टन रॉजर्स ने जो है फायरिंग डिले कर दी है, और वो इसी बात को सोच रहे हैं कि शायद वो प्लेन रिस्पॉन्ड करे, विंसेंस की जो कॉल्स आ रही हैं उनको वो रिस्पॉन्ड करें. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डिस्ट्रॉयज दिस फेंट होप. पेटी ऑफिसर लीच इज विंसेंस टैक्टिकल इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर.
और उनका काम है कि जितने भी एयर कॉन्टैक्ट्स होते हैं दे आर प्रॉपरली ट्रैक्ड. Altitude declining. वो सब देखते हैं कि प्लेन जो है नीचे की तरफ डाइव कर रहा है, उनकी तरफ. अ क्लासिकल फाइटिंग अप्रोच. Now you're in real serious business because anything can happen at that point. Whether that aircraft might launch something at you, it could be the aircraft itself. 15 miles, that's pretty close and pretty serious. Iranian aircraft on course 211, speed Track 4131 approaching 13 nautical miles. United States naval warship operating in international waters. Wait a minute. I could be dead. The tension is just continually rising during this whole time. Everybody was on edge. Everybody was like, oh my God, what's going to happen next? Subject to United States defense measures. Inbound air contact closing and descending 1,000 feet per mile. Range 13 miles. Oh my God, it's getting closer. It's getting closer. What's the captain going to do? What's going to happen? You know, what are they going to do? Iran Air की flight 655 now signs off with Bandar Abbas Airport. Point 4. Have a nice flight. Thank you. Good day. God damn it, he's getting close. Mark, incoming Boghammer, bearing 042. Air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. Captain Rogers' biggest fear is that Vincennes might face the similar as the another ship from USS Star. एक साल पहले ईरान एयरफोर्स ने उस शिप पे 2 मिसाइल दागे थे जिससे कि 37 लोगों की मौत हो गई थी और शिप जो था वो इट वाज नियरली लॉस्ट. जो इंक्वायरी हुई थी उस इंसिडेंट के बाद उससे ये रिजल्ट आया था कि फेलियर इन कमांड उसका कॉज था. द यूएसएस स्टार्क वाज नॉट एबल टू डिफेंड इटसेल्फ. द कैप्टन ऑफ द शिप वाज रिप्रिमांडेड एंड अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम नेवी. Captain, air contact still inbound, increasing speed and descending, range 11 miles. कैप्टन रॉजर्स फिर वही गलती दोहराने के किसी भी मूड में नहीं थे. Time is a demon here. At some point in time, you have to make the decision. When the aircraft reached a little over 10 miles, at that point in time, I either make the decision then or I don't make it at all because I reached minimum weapons range. It is a moment of truth. Captain Rogers turns his fire activation key. Take order, track 4131. Do I have a take order on the contact? Yes, take. Birds away. Rails clear. Iranian aircraft on course 209, speed 353 knots. जो कि final warning on the military air distress frequency is given to the aircraft. कैप्टन रॉजर्स जो है अपनी उंगली जो है होल्ड की पे ही रखते हैं जिससे कि लास्ट मिनट पे भी कैंसिल कर सकते जाए मिसाइल अगर वो प्लेन फाइनली इनकी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करे तो. Estimate 10 seconds to intercept.
on the bridge, the crew has confirmed the kill. और ये लोग समझ रहे थे कि जो प्लेन उनके ऊपर अटैक करने वाला है, it has now been finally destroyed. Captain Rogers thinks that he has saved his ship from destruction. Far from saving his crew, Captain Rogers has made a decision which will shock the entire world. God damn it, he's getting close. At the height of the naval battle in the Persian Gulf, USS Vincennes has misidentified an incoming aircraft to be an Iranian F-14 fighter jets. Take order, track 4-1. After the plane did not respond to their Vincennes warning calls, Captain Rogers has finally ordered the plane to be shot down. But he has made a fatal mistake. He has actually destroyed an Iranian passenger jet flying in international airspace. 290 passengers and crew are dead. और इरानियन मीडिया बहुत ही दुखद समाचार डिस्प्ले करता है of the bodies which are now floating in the Persian Gulf. And for Captain Rogers, the burden is heavy. जो भी मिस्टेक्स या जो भी डिसीजंस लिए होंगे, उनकी सबसे ज्यादा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे आती है ऑफ शूटिंग डाउन दिस इरानियन पैसेंजर जेट. लेकिन जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी. कैप्टन रोजाइन के बड़े भाई हुसैन जो हैं, उनकी अपने भाई की मॉर्टल रिमेन्स आइडेंटिफाई करते हैं इन अ मोर्चरी इन बैंडस अबरस. I try not to imagine where I went to. I try to forget it, and when I look at those bodies, I just can't control myself, and I just try to think about something else, not to think of what I saw. Captain Rosain's body is never recovered. Really, I'm shattered. Our family, especially his kids, his wife, my parents, which they're still living, and there is not a day that they don't talk about this, of what happened, why it should have happened. This incident caused an international outcry. सब यही बात कर रहे थे कि कैसे एक जहाज जिसमें कि आउट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगी हो, वो कैसे एक पैसेंजर जेट को एक फाइटर जेट की तरह मिस्टेक कर सकता है. Captain, do you swear that the evidence you are giving in this matter now an investigation? US गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई अंडर द चार्ज ऑफ रियर एडमिरल विलियम फोगर्टी के अंडर में, जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिरकार उस दिन क्या गलत हुआ था. My first reaction was it was a tragedy. The thing that stuck the most to me was you've got a lot of responsibilities ahead of you, Fogarty, and probably some sleepless nights. And nothing but the truth, so help you God. I do. The inquiry is conducted in a courtroom with Uniform Code of Military Justice. The stakes are high. Investigative journalist Charles Roger is a former Marine officer and he has studied this case. You're looking at a guy who's on top of the world. He's the captain of the billion-dollar Aegis cruiser, and now he's sitting at a table facing possible court-martial and even prison time. Fogarty's team now scrutinizes the action taken by the Vincennes crew with forensic detail. जब पहली बार फ्लाइट 655 रेडार पे दिखाई देती है, तब उस समय शिप जो है USS Vincennes is in a direct combat with the Iranian gunboats.
all aircraft within the radius of 100 kilometers are checked so that whether it is a friend or a foe. Identification supervisor एंडरसन जो है इंटरनेशनल फ्लाइट शेड्यूल को चेक करते हैं कि क्या ये कोई पैसेंजर जेट तो नहीं है, और एंडरसन इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टाइम जो यूज हुए हैं वो लोकल टाइमिंग्स यूज हुई हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोकल टाइम कहाँ का है, जो एयरपोर्ट था वहां का है या शिप में जो बहरीन का टाइम यूज हो रहा है वहां का है। You have the almost 30-minute delay caused by the late departure of IRR 655 due to a passenger with a visa problem. Then you have the 30-minute different time zone. So he looks at it and he's seeing there's nobody within an hour scheduled to be over us. जो IFF सिस्टम होता है वो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अ फ्रेंड और अ फो। एडमिरल फोगोटी ये भी जानते हैं कि ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि कैसे विंसेंस का क्रू जो था एक पैसेंजर जेट जो कि मोड 3 सिग्नल दे रहा था उसको कैसे कंफ्यूज हो गए विद अ फाइटर jet giving signal 2. And in your mind, that was not ComAir? In my mind, sir, it was not a ComAir. And why? Because I had saw that Mode 2 squawk, sir. The Mode 2 was the big indicator for you? Yes, sir. फोगोटी ये भी पता लगाते हैं इंटेलिजेंस के द्वारा कि जब ईरान एयर की फ्लाइट IR-655 was preparing for takeoff, एक इराकी फाइटर जेट F-14 भी it was on the tarmac. और ऐसा लगता है कि एंडरसन ने जो अब हुक टैब को होल्ड किया लगा था टू हुक अप फ्लाइट 655, उन्होंने अपना सिस्टम 90 सेकंड के लिए ऑन रख दिया था, जिसका के कारण ये हुआ कि 655 जो था वो आसमान में उड़ चला था, लेकिन उनके जो सिस्टम था वो अभी भी बैंडस अराबास एयरपोर्ट पे ही हुक था वो। और ये एक ह्यूमन एरर है caused by the poor design on this ship. He left the ball tab on Bandar Abbas. So what we believe happened, and I'm pretty sure this is exactly what happened, he picked up the Mode 2 of the Iranian fighter that was getting ready for takeoff behind the Airbus. Identification of the fighter jet confirms Captain Rogers' intelligence information that during the July 4th weekend it would be trouble for him. और वो ऐसा समझते हैं कि जो फाइटर जेट है वो जो है it is a combined coordinated attack on the USS Vincennes from both sea and air. Sir, possible ComAir. So he places less weight on the possibility that this incoming jet is a commercial airliner. Do you recall Lieutenant Montford saying ComAir, ComAir? I absolutely remember him telling me that, and I think I raised my hand or something to that effect to indicate that I'd heard him. You held up your decision to fire. Yes, sir. Why? I wanted every bit of information I could get. IFF was an indicator, but I didn't care whether 1100 was an F-14 or that Falker that flies around out there. But at this point, I thought they always talk to us. Iranian aircraft on course 211. उस जहाज USS Vincennes ने टोटल 10 वार्निंग कॉल्स दी थी एयरक्राफ्ट को, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि फ्लाइट 655 ने एक भी बार रिस्पॉन्ड नहीं किया था? What we do know for sure is the aircraft did not respond to the warnings. He had to have something, he being the commanding officer, as proof that this was commercial air. He never got that. Unidentified Iranian aircraft on course 2. पर विंसन ने 7 वार्निंग तो उनको मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज पे दी थी जो कि फ्लाइट 655 रिसीव ही नहीं कर पाए थे. The Airbus did not even have a radio that was set or could accept the military air distress frequency.
I mean, it's just not something they had. They had no need for it. They were a commercial airplane. विंसेंस ने सिर्फ 3 ही वार्निंग भेजी थी सिविल डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन उसमें भी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था उस एयरक्राफ्ट को जिससे कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. Unidentified aircraft on course 210, speed 350, altitude. The Vincennes radio talkers are citing the ground speed of the aircraft. During 201, 20 miles from you. You are standing into danger and may be subject to United States defensive measures. But Captain Rosain's instruments show airspeed, which is a relative measure. उनकी airspeed तकरीबन 50 nautical miles slow थी, जो कि ground speed बताई जा रही थी 355 miles per hour की उस speed से. So if the pilot hears that, well, who are they talking to? They haven't identified us. They must be talking to maybe the P-3 or maybe some other Iranian aircraft. Throughout its flight, Flight 655 gives out a signal which can easily tell what type of aircraft is on the radar. Or if Vincennes had told that smoke code, तो Captain Rosain को पता लग जाता कि वो उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. But the US Navy does not require its radio operators to speak on this frequency when speaking to some civilian aircrafts. Captain, do you wish to engage at 20 miles? और जैसे जैसे वो जहाज इनकी शिप की तरफ बढ़ रहा था, the pressure on Captain Rogers was mounting. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? When you look at the time window that he had, he waited till the very last minute. And it becomes a point of, am I going to shoot or am I not going to shoot and wait, in which case he would not be following his responsibilities to protect his ship and his crew. कैप्टन रॉजर्स ने जो फायर किया था उस डिसीजन को ये भी पक्का करता है कि जब उन्हें खबर मिली कि वो जो प्लेन है वो नीचे की तरफ आ रहा है in a way to attack their ship. Okay, were you reporting descending elevations over the net? Over the internal net? Yes, sir. So in other words, when you saw that track, that aircraft start descending, you were reporting that up to TAO, CO, Gulf Whiskey? Yes, sir. और जैसे कि एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स होता है, वैसे ही विंसेंस के जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने सारा डाटा रिकॉर्ड कर दिया था, जो कि कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर की स्क्रीन्स पे दिखाया जा रहा था. और उनसे पता लगता है कि ईरान एयर की फ्लाइट IR-655 had never descended. It was, in fact, ascending the whole time. That was a revelation that we had not anticipated. Altitude declining. Is it possible? Is it possible that somebody, although the data showed perhaps that it was going up, would say it's going down, descending? Fogarty sends a medical team, including a psychiatrist, to the Vincennes. वो पता लगाते हैं a condition called scenario fulfillment might played a hand in the tragedy. Range 13 miles. And as it turns out, where you believe something so badly is going to happen, that whether the data shows you it's not the case, you believe it's happening. और अगर जो कमांड में थे उस दिन उन्होंने अपने मॉनिटर स्क्रीन्स को स्टडी किया होता तो उन्हें पता लग जाता कि फ्लाइट 655 जो है क्लासिकल मैनूवर में डाइव नहीं कर रही है. इट इज कंटिन्यूइंग इट्स अप्रोच ऑफ क्लाइंबिंग फर्दर. और किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा. Well, Scott, we have this disparity between what the data indicates happened and what the people said they saw at their various altitudes. Any idea why? Well, sir, the disparity baffles me. I thought about this for many days now, and
I came to the realization that this data to me doesn't mean anything because I reacted to people I had operated with who were reliable. And when they reported at short range they had decreasing altitude, increasing speed, I had no reason to doubt them. I had to make a split-second recommendation to the commanding officer, and I did. So Lieutenant Commander Lustig judged his men's judgment. My confidence in Lieutenant Commander Lustig confirmed to me that the aircraft was in fact a threat. At 9 miles, I felt I could no longer delay defensive action. I granted firing permission. When I looked at the timeline that he had to make a decision and the information he was given upon which to make that decision, it was my feeling, to this day I still feel the same way, that he made the right decision with the main thing in his mind: I don't want my ship to get hit. Take order, track 4131. The sophisticated system on Vincennes gives its crew an accurate picture, but the crew have with their fear. उनको एक डर है और उन्होंने एक थ्रेट बना ली अपने दिमाग में जहां पे कि कोई थ्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1 महीने के बाद एडमिरल फोगोटी जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं और उनका निष्कर्ष ये होता है कि डाउनिंग ऑफ ईरान एयर फ्लाइट IR-655 is not due to any negligence or culpable conduct conducted by any US Navy personnel. कैप्टन रॉजर्स ने बिल्कुल सही बिहेव किया था। जो जानकारी उन्हें मिली थी और जो कम टाइम स्पैन था उनके पास, उसमें उनको बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना था रादर, और उन्होंने सही एक्ट किया था इस सिचुएशन में। उनके मुताबिक ईरान should also take some responsibility in hazarding their civilian airlines close to where the hostilities are happening. यूएस गवर्नमेंट जो है एडिटेड रिपोर्ट फोगोटी की पब्लिश करती है और एक उन्होंने बहुत ही की फैक्टर जो है लोगों से, दुनिया से छुपा के रखा है, और वो की फैक्ट जो है विल कास्ट अ होल न्यू लाइफ ऑन ईरान एयर फ्लाइट IR-655। 1988 की अगस्त में विलियम फोगोटी की जो रिपोर्ट थी, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने ऐसा पाया था कि कैप्टन रॉजर्स और उनके क्रू मेंबर ने बिल्कुल सही बिहेव किया था एट द टाइम ऑफ दिस ट्रेजेडी। बट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रॉजर चार्ल्स इज नॉट कन्विंस्ड। उन्होंने कैप्टन फोगोटी की रिपोर्ट पढ़ी थी और एक चीज जो उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगी थी वो था कि कोई मैप नहीं था इस रिपोर्ट में रिगार्डिंग विंसेंस पोजीशन। I knew the fact that there was no such chart in the Fogarty report, again, was a signal, and a curious signal to me. Why is it not there? Skipper, you better come down. Sounds like the Montgomery's got her nose in a beehive. I'll be right there. जब रॉजर्स को ये पता लगता है कि ईरानियन गनबोट जो है मर्चेंट वेसल को तंग कर रही हैं, तब वो उनकी पोजीशन इट इज वेल साउथ टू द Montgomery and destined for port in Bahrain. Gulf Sierra, this is Vincennes. Request permission to support USS Montgomery against surface contacts. Over. Rogers asked Captain Richard McNever, his surface commander, for permission to go and help Montgomery. But Richards only advises him to send his helicopter to investigate. After that, Vincennes out. Vector in, Ocean Lord. और रिचर्ड को थोड़ी देर में बहुत आश्चर्यचकित होता है जब उनको पता लगता है कि विंसेंस हैज टर्न्ड अराउंड एंड वो मॉन्टगोमरी के काफी करीब आ गई है। वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दो एंड द विंसेंस शुड टर्न बैक इमीडिएटली। My own personal opinion is it really did feel that they were looking for action when they went to see the Elmer Montgomery. My own feeling is that the situation was not out of control. It was really my call, and yet, even though they were assigned another station, they took it upon themselves to be there. And to that extent, I feel that
You know, I mean, that's where the general feeling, and not just my own, comes that maybe they were looking for trouble. Jesus! We need the Lord. This is Ocean Lord 25. We are taking... और जब इरानियन गनबोट्स ने विंसेंस के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करी, so the situation changed. Close Ocean Lord's position at best speed. और अब rules of engagement के मुताबिक Captain Rogers can take drastic action, active action on the Iranian gunboats. General quarters, officer of the... He is then authorized to go in hot pursuit of the Iranian gunboats, but where does it lead him? 1990 में रॉजर चार्ल्स को मिलती है एक restricted report of the Iranian flight IR-655 from the International Civil Aviation Organization से. इस रिपोर्ट में उनको विंसेस की पोजीशन मार्क मिलती है, और जब वो चार्ट पे इस पोजीशन को मार्क करते हैं तो एक बहुत ही स्टनिंग डिस्कवरी उनको पता लगती है. उनको ये पता लगता है कि जब ईरान एयर की फ्लाइट 655 को शूट डाउन किया गया तो विंसेस उस समय 4 किलोमीटर जो थी इनसाइड इरानियन वाटर्स थी. इरानियन गनबोट्स का पीछा करते हुए जो कैप्टन रॉजर्स ने अपनी शिप को he has put his ship in the direct path of the Iran Air IR-655 flight. If Rogers had not taken the Vincennes up to attack the gunboats, there would have been no shoot down of IR-655. I mean, that's clear. There would have been no ongoing surface action. Rogers would have had his radar screen set for the air side of things. The focus would have only been on the air picture. They would have had plenty of time to make a proper determination that this was a commercial airliner. Despite the tragedy, the crew of Vincennes received a hero's welcome when they made port at San Diego. Captain, do you wish to engage the target at 20 miles? Lieutenant Commander Scott Lustig को एक नेवी मेडल से सम्मानित किया गया था for his action in the fight. Take order, track 4131. कैप्टन रॉजर्स को भी एक लीजन ऑफ मेरिट ऑर्डर से सम्मानित किया गया था for being the commander in chief of the USS Vincennes. Both men have since retired from the Navy. हर साल जिन लोगों की जान गई थी उस फ्लाइट के डाउनिंग में IR-655, उनके जो सगे संबंधी हैं वो इस दिन को याद करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि पेश करते हैं अपनी तरफ से. For Hussein Desire, the brother of the captain of that flight 655, time has not healed his wounds. I still feel the same way. Although I try to keep myself busy, not to think about it, because it's still, I mean, it's an unforgettable human tragedy. Even after 17 years passed, the horrors of what went on in that day, you know, still lingers on in everybody's life. और एक ऐसे टाइम में जबकि टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड बनती जा रही है तो डर इंसान का बेसिक वो फीलिंग जो है वो डर है और उसकी वजह से कितनी ही बड़ी बड़ी ट्रेजेडी कई बार हो जाती है. तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं अपने फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 3 जुलाई 1988 की एक घटना, द डाउनिंग ऑफ द ईरान एयर फ्लाइट IR-655 बाय USS Vincennes. अगर आपको मेरे शो के रिकॉर्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि
bhambri.r@gmail.com। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट चैनल पे, जिसका नाम है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।